Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna. And so we were requested to speak on the holy name for the next 8 or 9 days. This is Holy Name Week. So this is the first verse from the Sikshastakam prayer. हरे कृष्णा। तो जैसा कि अभी हरि नाम सप्ताह चल रहा है, तो हमें आने वाले कुछ 8 या 9 दिन हरि नाम की महिमा के बारे में कहने को कहा गया है। तो आज हम शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री निश्चित भगवान की जय। And each day we'll do one verse. प्रतिदिन हम एक श्लोक का पाठ करेंगे and discuss one verse. एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। Today I'll give a little overview of the whole prayer, all of the prayers. आज मैं पूरी प्रार्थना का एक परिचय दूंगा। And then begin discussing the first verse. उसके बाद हर एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। Umagyantimidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Vatsyatya Desatarine Panchakalpa Turubhischa Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So I guess the best way to do this verse is to do it line by line. Cheto darpanam arjanam bhava mahadevani nirvapanam Shreya kaiva chandrika vitaranam vidyabadu jivanam Anandam Bhuri Bharanam Pratipadam Purnam Rikta Swadanam Sarvatma Snaparam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Anyone? Shreya Kaiva Chandrika Vitaranam Vidyabadu Jivanam Ananda Budi Vardhanam Patipadam Purnam Rita Swadanam One of the ladies, one day. Nirvapanam Shreya Kaiva Vichandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Budi Vardhanam Purnam Rita Swadanam Cheta of the heart, Darpana, the mirror, Marjanam, cleansing, Shreya, Bhava, of material existence, Mahadavag Agni, the blazing forest fire, Swapanam, extinguishing, Shreya, of good fortune, Kairava, the white lotus, Chandrika, the moonshine, Vitaranam, spreading, Vidya, of all education, Vadu, wife, Jivanam, the life, Ananda, of bliss, Amburi, the ocean, Vardhanam, increasing, Pratipadam, at every step, Purnam Amrita, of the full nectar, Asvadanam, giving a taste, Sarva, for everyone, Atmasnaparam, bathing of the self, Param, transcendental, Vijayate, let there be victory, Sri Krishna Sankirtanam, for the congregational chanting of the holy name of Krishna. And I'll just read what it says here in the purport. This is the first verse of the Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sikshastakam.
The other 7 verses are found in text 16, 21, 29, 32, 36, 39, 47. तात्पर्य यह श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक है। अन्य 7 श्लोक 16, 21, 29, 32, 36, 39 तथा 47 क्रमांक के श्लोकों के रूप में मिलेंगे। Okay. So, Srila Rupa Goswami has mentioned that the process of pure devotional service goes through 9 stages of development up to the stage of prema perfection. श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति की विधि है वह 9 स्तरों से होकर जाती है जब आखिरी में वह प्रेम तक पहुंचती है। Adaustrada, sadhusanga, bhajana kriya, anartha nivritti, nishta, ruchi, ashakti, bhava, and prema are the 9 stages by which the process of bhakti evolves to the stage of perfection. तो साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इस तरह से वो पूर्ण विकसित होती है। So in these 8 prayers, these 9 stages are described. इन 8 प्रार्थनाओं में ये 9 जो स्तर हैं उनका वर्णन है, Step by step. क्रम दर क्रम। I'm giving an overview right now, then I'll go back over and explain a little bit more in detail. मैं अभी एक परिचय दे रहा हूँ, विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करूंगा। Also within these prayers are the entire stages of the entire category of the Vedic subject matters. तो इन प्रार्थनाओं में जो वेदों के पूर्ण ज्ञान है, समस्त ज्ञान को का भी इसमें सार है। What is that first one? Prayojana, Sambandha, Avideya, Prayojana are found within these 8 verses, step by step. क्रम दर क्रम इन 8 श्लोक में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भी आता है। Bhakti is also divided into 3 categories. It's sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. तो भक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। The first 6 stages are sadhana bhakti. तो इसके जो first 6 stages of the 9 steps. तो ये जो 9 स्तर हैं उनके जो पहले 6 अंग हैं वो साधना भक्ति के हैं। The next 2 are bhava bhakti. अगले 2 भाव भक्ति के, And the last 2 verses are prema bhakti. और जो अंतिम 2 स्तर हैं वो प्रेमा भक्ति के हैं। And the first 6, the development of Krishna consciousness moves along from rules and regulations to spontaneous devotional service up to sadhana bhakti has 2 stages, Vaidhi bhakti, Raganuga bhakti. Bhava bhakti has 6 stages, which are described, and prema bhakti has 8 stages. तो जो पहले 6 अंग हैं उसमें उस साधना भक्ति के बारे में बताया कि वो कैसे कैसे धीरे पहले नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए वो कैसे स्वाभाविक भक्ति में परिणत हो जाती है। साधना भक्ति के 2 अंग हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति के 6 अंग हैं, प्रेम 9 भाव भक्ति के 6 अंग हैं और प्रेमा भक्ति के 8 अंग हैं। Lord Chaitanya wrote these 8 verses. श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों की रचना And की he included the entire process of pure devotional service in these 8 verses.
और शुद्ध भक्ति की जो भी विधि है उसको पूरी तरीके से इसमें उन्होंने लिख दिया. Well, just to give you a little bit more of an understanding of these prayers and how deep they are in bhakti. Yeah. Srila Bhakti Vinod Thakur says the first verse is Hare Krishna. तो इसके बारे में बताने के लिए कि ये प्रार्थनाएं कितनी गंभीर हैं, कितना गहन इसका अर्थ है, ये आपको बताने के लिए बताऊंगा कि जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो बताते हैं कि जो पहला श्लोक है वो है हरे कृष्ण महामंत्र. The second verse is Hare Krishna. दूसरा श्लोक भी हरे कृष्ण. The third verse is Krishna Krishna. तीसरा श्लोक कृष्ण कृष्ण. The fourth verse is Hare Hare. चौथा श्लोक हरे हरे. Fifth verse is Hare Rama. पांचवा श्लोक हरे राम. The sixth verse is Hare Rama. छठा श्लोक हरे राम. Seventh verse is Rama Rama. सातवां श्लोक राम राम. And the last verse is Hare Hare. और आखिरी श्लोक हरे हरे. So when you're chanting these verses, you're actually chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो जब आप इन श्लोकों को पाठ कर रहे होते तो यानी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे It's हैं. absolute. It's non-different. यह अभिन्न है हरे कृष्ण महामंत्र से. It's recommended that each and every devotee, before they begin their japa, recite these 8 verses every day. ऐसा सुझाया जाता है कि हर एक भक्त जब भी प्रतिदिन अपनी माला पर जप करे तो उसे इन श्लोकों का पाठ करना It चाहिए. helps prepare the mind for the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. ये हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में मदद करती हैं. Srila Prabhupada says the Goswamis of Vrindavan wrote all of their books. We have Jiva Goswami, about 400,000 verses. We have Rupa Goswami, hundreds of thousands of verses. We have Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, and some by Gopal Bhatta Goswami. All of their writings were based on these 8 verses. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो गोस्वामी हैं उन्होंने कई सारे शास्त्रों की रचना की. श्रील जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक की रचना की. श्रील रूप गोस्वामी भी कई लाख श्लोक रचे. श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सारे गोस्वामियों ने जो भी अपने ग्रंथों की रचना की वह इन्हीं श्लोकों पर आधारित थी. So you can't imagine, but these 8 verses are the entire process of pure devotional service in detail. तो आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जो सारे श्लोक हैं, ये पूरी प्रार्थनाएं, इनमें शुद्ध भक्ति का कितना विस्तार से वर्णन किया गया है. So our business is try to study these verses and understand deeper what each word means, not only each verse but each word. तो हम इसको अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि हर एक शब्द का क्या अर्थ है. हर एक श्लोक का ही नहीं, हर एक शब्द पे भी चर्चा करेंगे. I mentioned that the 9 stages are there in the process, in these 8 verses. हमने ये चर्चा की कि भक्ति के जो पूरे 9 स्तर हैं इन 8 प्रार्थनाओं में हैं. Different charyas give different understandings. अलग अलग आचार्य अलग अलग रूप से इसे समझाते हैं. The standard understanding is the first verse is Adao Sradu Sadhu Sangha Bhajana Kriya. तो साधारणतः यह बताया जाता है कि जो पहला श्लोक है वह है श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया. The second verse is Anartha Nivritti. दूसरा श्लोक अनर्थ निवृत्ति के लिए. The third verse is Nishta. तीसरा श्लोक निष्ठा. The fourth verse is Ruchi. चौथा श्लोक रुचि. The fifth verse is Ashakti. पांचवा आसक्ति. The sixth verse is Bhava. छठा भाव. And the 7th and 8th verse is Prema Bhakti. The first one, number 7, is Prema in separation. Verse number 8 is Prema in meeting. So, Vipalamba, Sambhog, through 7th and 8th verse. तो 7वां और 8वां श्लोक प्रेमा भक्ति के लिए, 7वां
श्लोक संभोग में प्रेमा भक्ति और 8वां श्लोक विरह में प्रेमा भक्ति। That's just the beginning of a little bit of the power and the fullness of these 8 verses. तो इन 8 श्लोक के पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे इनमें कितना ही महिमा है। These verses were written by God. इन श्लोकों की रचना स्वयं भगवान ने की। So they're directly written by the Supreme Lord Himself. So they are the most powerful verses in describing the process of pure devotional service. तो चूंकि इन श्लोकों को स्वयं भगवान ने कहा है तो ये सबसे शक्तिशाली श्लोक हैं शुद्ध भक्ति को बताने के लिए। In the first verse, there are 7 listings of the benefits that one receives from chanting the Hare Krishna Mahamantra. पहले श्लोक में 7 फायदा लाभ का वर्णन किया गया है कि जो हरि नाम का जप करने से होता है। Cheto Darpana Marjanam, चेतो दर्पण मार्जनम, cleanses the mind, cleanses the heart. हमारे हृदय और मन को शुद्ध करती है। Bhava Mahadevagni Nirvapanam, भव महादावाग्नि निर्वापणम, pushes back the sufferings, the fire of material existence. भव सागर की महादावाग्नि को बुझाता है। Shreya Kaiva Vichandrika Vitaranam, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, it awakens one's ultimate good fortune. यह व्यक्ति के सौभाग्य को जागृत करता है। Vidya Vadu Jivanam, विद्या वधु जीवनम, it is the life of transcendental knowledge. यह जो दिव्य ज्ञान है उसका जीवन है। Anandam Buddhi Vardhanam, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ocean of material of happiness. यह आनंद का सागर है। Pratipadam Purnamrita Swadanam, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, at every stage of development one becomes more and more aware of their relationship with Krishna in the spiritual world. तो प्रत्येक पद पर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से और भगवान के आध्यात्मिक जगत से अपने संबंध को और अच्छे से समझता है। Sarvatma Snaparam सर्वात्म स्नपनम means that sarva means all, snapanam means bath. That means everything in relationship to the devotee becomes purified. Your home, your family, you, your possessions, everything. Complete bath of all, everything by the chanting of the holy name. Purifies everything. तो सर्व मतलब सब और आत्मस्नपन मतलब स्नान, यानी कि जो भक्त से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वह सब शुद्ध हो जाती हैं, चाहे उसका परिवार, हृदय, उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सब शुद्ध हो जाती हैं। You see in the different translations, there are 2 translations that are used for this first verse. And this particular translation from Chaitanya Charitamrita, it describes what happens as a result in the very beginning of the verse. तो इस श्लोक के 2 अनुवाद मुख्यतः हैं। चैतन्य चरितामृत में इसके जो अनुवाद किया गया उसमें ये बताया गया है कि हरि नाम को जप करने से क्या होता है। It's a declaration. यह घोषणा है, It's a celebration. यह उत्सव है, It's a great announcement. यह जोर से की गई घोषणा है। Let there be all victory for the chanting of the holy name of the Lord. कि भगवान के जो हरि नाम संकीर्तन है उसकी परम विजय हो। And the other translation is that's mentioned at the end. और अगला अनुवाद में इसको अंत में वर्णन किया जाता है। So whether you mention it at the end or the beginning, it's a declaration glorifying those who chant the holy names of the Lord. तो भले ये पहले या अंत में बताया जाए, लेकिन ये उन्हीं को गौरवान्वित करता है जो हरि नाम का जप करते हैं। And I'll give you another interesting little bit of information. मैं आपको एक और अत्यंत रुचिकर जानकारी दूंगा, Just to show you Sri Chaitanya Mahaprabhu how he does things. कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं, कार्य करते हैं। The 7 benedictions that I mentioned, ये जो 7 वरदान जिनकी मैंने चर्चा की, each one of the benedictions ends with the suffix nam.
तो ये सारे जो वरदान हैं वो नम शब्द से खत्म होते हैं। Jaitalbarpanamarjanam Bhavamahadevaग्नि निर्वापनम श्रेयकाविकान्विकावितरणम विद्यावधूजीवनम आनंदम भूरिवर्धनम पतिप्रदाम पूर्णामृतस्वर्धनम सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हाँ, तो जैसा कि हर एक पद के अंत में नम आ रहा है, Only God can do that. सिर्फ भगवान ही ये कर सकते हैं। When you think about it, how he structured that explanation where each of the benedictions ends with the suffix nam. तो आप ये सोच सकते हैं कि भला चैतन्य महाप्रभु ने इसकी रचना किस प्रकार से की कि सब में नम प्रत्यय आ रहा है। Okay, so I'll begin explaining. I'm trying to explain these different stages, different benedictions. तो ठीक है, मैं इन जो भी भगवान द्वारा दिए गए वरदान हैं उन पे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। I'll just give a brief overview because each one of them is a class in itself. तो मैं सिर्फ एक छोटा सा परिचय दे रहा हूँ क्योंकि हर एक वरदान आप अपने आप में एक पूरा कक्षा ले सकता है। Chaita, mind, darpana, to cleanse, marjanam. No, marjanam means cleanse, darpana means mirror. So the mind is compared to a mirror. तो चेत यानी कि मन, दर्पण यानी कि आईना, शीशा, मार्जनम यानी कि सफाई करना। तो मन की तुलना शीशे से की गई है, दर्पण से। Why is the mind compared to a mirror? वैसे मन को इस दर्पण से क्यों तुलना की गई? Because what reflects inside is seen outside. क्योंकि जो हम अंदर प्रतिबिंब में दिखता है वही बाहर दिखता है। Nobody sees the world in the same way. कोई भी दुनिया को उस तरह से ही देखता जिस तरह है। So there is what is called an objective reality. तो इसको कहते हैं वस्तुओं की। That means there is a real reality that is the actual reality. यानी कि एक वास्तविक तथ्य और एक अपरोक्ष तथ्य है। But each living entity, due to their association with material energy and covered by that material energy, sees the external environment differently. क्योंकि हर एक जीव भौतिक प्रकृति से आच्छादित है, इसलिए वो भौतिक जगत को भिन्न रूप से देखता है। And the mind is a reflection of what it is. ये हमारा मन वही प्रतिबिंबित करता है जो कि वहां अंदर है। Two people can see the same thing and have a different experience. तो कोई अलग अलग व्यक्ति एक ही चीज को एक ही प्रकार से देखते हैं लेकिन उनके अनुभव अलग होते हैं। And all of this is due to the association of the material energy. और ये सब सिर्फ भौतिक प्रकृति के संग के कारण है। What is the objective reality or the only reality? वास्तविक तथ्य क्या है? Well, Krishna explains that in the Bhagavad Gita. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, When you thus understand the truth, you'll see that all living beings are my parts and parcel. They are in me and they are mine. तो जब आप सत्य में समझते हैं कि ये सारे जीव मेरे ही अंश हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में हैं। One who actually has pure spiritual vision sees Krishna everywhere and everything in Krishna simultaneously. जिसमें शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि है वह भगवान कृष्ण को हर जगह देखता है और सब कुछ भगवान कृष्ण में देखता है। But if you don't see like that, then there's some work to do. तो अगर आप इस प्रकार से ही देख सकते हैं, इसका मतलब आपको कुछ काम करना होगा। In other words, the mind is still covered by, dust. इसका मतलब आपके मन पे कुछ धूल जमी है। So getting rid of the dust is purifying the mind by chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो मन की इस धूल को हटाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। But how much dust is there? लेकिन कितनी धूल है वहां पे? Sometimes we say, I've been chanting for 30-40 years. I'm still dusty. तो कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं तो 34 साल से जप कर रहा हूँ फिर भी अभी तक धूल गई नहीं। One devotee said to Srila Prabhupada, this was very beginning of the Hare Krishna movement. He said, Srila Prabhupada, I've been practicing Krishna consciousness for 1 year now, and I still don't have love of God. तो ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है हरे कृष्ण आंदोलन की। एक भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद,
मैं पूरे 1 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, फिर भी मुझे भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ। I said, oh, 1 year. श्री प्रभुपाद ने कहा, अरे 1 साल, How many lifetimes you've been in this material world? इस भौतिक जगत में तुम कितने जीवन रह चुके हो? Koti. कोटि करोड़ों। Yeah, koti karam. So many lifetimes. कई सारे जीवन पर्यंत। So it takes a while. कुछ समय तो लगता है, Don't give up. इसलिए प्रयास मत छोड़िए। And so continue the process, and it works gradually. इस विधि को अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। But don't put any dirt back on. That's the whole process. लेकिन और ज्यादा धूल नहीं इकट्ठा करिए। You're cleaning, keep cleaning. तो यदि सफाई कर रहे हैं तो सफाई करते रहिए, Not like Hasti Snan. हाथी के स्नान की तरह नहीं। You know, Hasti is elephant. He goes into the ocean or in the water, in the lake. He bathes very nicely, throws water on him. He comes clean, and he comes out on the land, picks up some dust and throws it over again. तो आप जानते हैं हाथी क्या करता है? पानी में जाता है, नहाता है, अच्छे से खूब नहाता है, फिर वापस जमीन पे आता है और अपने ऊपर वापस पूरा धूल डाल देता है। What is the use of his bath? He has no value. तो उसके नहाने का अर्थ ही क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। So the process works. Keep cleansing, keep purifying. तो यह विधि तो काम करती है, शुद्धिकरण करती है, And the holy name is the essence of that purification. और यह हरि नाम इस शुद्धिकरण का सार है। Cheta Darpanam Marjanam. चेत दर्पण मार्जनम, Cleans the mirror of the mind. यह मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता है। The reflection of one's consciousness is imposed upon the external environment. हमारे अंदर जो चेतना है वही वो बाहर के अनुरूप दिखती है। There's a little story that illustrates this. एक छोटी सी कहानी जिससे इसको समझाया जा सकता है। There's one elderly man. He's at his home, and he's deaf. He can't hear so good. एक थोड़ा बड़ा बूढ़ा आदमी अपने घर पे, और वो थोड़ा बहरा है। His wife is in the kitchen. She's cooking. उसकी पत्नी किचन में है और वह रसोई कर रही है, He's waiting for the prasad. और वह व्यक्ति प्रसाद के लिए इंतजार कर रहा है। So he calls his wife. वह अपनी पत्नी को बुलाता My है। dear wife, when will the food be ready? तो मेरी प्रिय पत्नी, खाना कब तक तैयार हो जाएगा? She says, shut up, just read the newspaper or be quiet. वो बोलती, चुपचाप रहो, अखबार पढ़ो। I'm still cooking. मैं अभी भी बना रही हूँ। But he doesn't hear that. लेकिन वो नहीं सुन पाता। So after some time, he calls again. तो कुछ समय बाद वह फिर से बुलाता है। And again, his wife tells him, keep quiet, I'm still cooking. वह अपनी पत्नी को बुलाता है, उसकी पत्नी वापस चिल्लाती कि मैं अभी तक बना रही हूँ। So then he says, what's wrong with my wife? I'm calling her, and she must be deaf because she's not answering me. और वो सोचता है कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है? हो सकता है वो बहरी हो गई, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। He's deaf. जबकि वो खुद बहरा He है। can't hear her calling. वो नहीं सुन सकता कि उसकी But पत्नी he उसे thinks बता रही she's है, deaf. लेकिन वो सोचता है कि उसकी पत्नी बहरी है। What is that? Atmanam Manjate Jagat. आत्मवत मन्यते जगत। Yeah. Everybody thinks that they think like me. Everybody thinks, a person thinks, everybody thinks the same way I do. तो सब लोग यही सोचते हैं कि वही तरीका से जिस तरह से मैं करता हूँ, But that's not true. लेकिन ऐसा नहीं है। Yeah. So that's the reflecting of the mind. The mind has its own conceptions based on its association, attachment to the material energy. It imposes that same consciousness on the external environment and sees things in a certain way which are incorrect. तो ये हमारी भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के संग के कारण है कि हम जिस प्रकार से जिसका संग करते हैं, जिस चीज को जिस प्रकार से देखते हैं, बाहर के लोगों पे हम उसी प्रकार के विचार थोपते हैं। Chant the holy names. हरि नाम का जप करिए, Purify the chanting, and gradually the mind becomes clear. तो धीरे धीरे हरि नाम का जप करने से हम शुद्ध होते हैं और मन भी शुद्ध होता है। The pure mind is like a pure lake that when you look
from the top down into the lake, you can see the bottom. तो शुद्ध मन एक शुद्ध झील की तरह है कि जब आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे का आप सतह देख सकते हैं. It's just like if you go to Lakshman Jhula in Hardwar. उस तरह से जैसे हम हरिद्वार में लक्ष्मण झूला जाएं. You can look from the top down, you can see the bottom. The water is translucent, it's clear. आप ऊपर से देखेंगे और आपको नीचे पानी की सतह दिख जाएगी पूरा स्वच्छ. So the pure mind reflects the soul's nature. तो जो शुद्ध मन है वह हमारी आत्मा की प्रकृति को प्रदर्शित करता है. Rather than being an obstacle in the relationship with God or Krishna, then it actually brings one to Krishna. The mind becomes clear. The soul can connect with Krishna directly through the purified mind. तो जब मन शुद्ध हो जाता है तो मन भगवान से जुड़ने के लिए बाधा नहीं बनता, बल्कि वह हमें और सुलभता से भगवान के प्रति उन्मुख करता है. Because Krishna is everywhere. क्योंकि कृष्ण हर जगह है. Can we see him everywhere? क्या हम उन्हें हर जगह देख सकते हैं? Antarastam paramam chayantarastam. He's in every atom. He's between every atom. He's everywhere. अंडांतरस्थम परमाणु चांतरस्थम, वो हर एक अणु में है, हर अणु के बीच में भी है. क्या हम देख सकते हैं? But we need to see him in his deity. That's all we can do. लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? उनके विग्रह के रूप में उन्हें देख सकते हैं. But we should also try to see him within the hearts of the devotees. Vidyaya vinaya sampane brahmani gavi hastini suni chaiva swapake cha pandita samadarshan. Well, samadarshan means one who sees clearly, perfectly, that all living beings are actually pure spiritual beings, part and parcel of the Supreme Lord. लेकिन हमें उन्हें भक्तों के हृदय में भी देखना चाहिए, जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी. और तो ये इस श्लोक में समदर्शिना शब्द का क्या अर्थ है? कि वह भगवान को हर एक जीव के हृदय में देखता है. हर एक जीव भगवान का एक शुद्ध आत्मा है. The second one is Bhava Mahadevagni Nirvapanam. दूसरा पद भव महादावाग्नि निर्वापणम. Devagni means forest fire. दावाग्नि यानी जंगल की आग. So this material world is like a blazing fire. तो यह भौतिक जगत जो है वह दावाग्नि है. It's destroying all of the existence of the living entity. यह जीवों की सारे अस्तित्व को नाश कर देता है. Now, when you have a forest fire, जब आपके पास दावाग्नि होगी, you can't call your fire brigade. They can't put it out. तो आप दमकल कर्मियों को बुलाकर आग नहीं बुझा सकते. The only way you can put out a forest fire is you have to have monsoon. तो जंगल की आग को बुझाने के लिए आपको बारिश की जरूरत पड़ेगी. Then the fire will gradually be extinguished. तब जाके आग बुझ सकेगी. So this material world is like that. It's like a blazing fire. तो ये भौतिक जगह उसी तरीके से है, एक दावाग्नि. Adhyatmika, adhibhautika, adhidaivika. आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक. The three kleshas, the three forms of miseries. Miseries of the body and mind, we all know that. Especially when you get old, you know about miseries of the body, miseries of the mind, miseries of other persons, living entities, government. These are all forms of misery by living entities and higher powers. Bad weather, cold weather, hot weather, coronavirus. So many miseries coming by the material energy. तो तीन तरह के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक आदि दैविक. तो ये जो तीन तरह के क्लेश हैं, आप समझ ही सकते हैं कि शरीर के क्लेश होते हैं, मन के क्लेश होते हैं. विशेषकर जब आप बूढ़े होते हैं तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये शरीर के क्लेश क्या है. और अन्य जीवों के द्वारा जो क्लेश दिए जाते हैं, या फिर सरकार के द्वारा, या फिर अन्य ऊंची सत्ता के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए ठंडी, गर्मी, बारिश, इस प्रकार से. As long as we have a material body, we are subjected to misery. क्योंकि हमारे भौतिक शरीर है, इसीलिए हमें ये क्लेश भोगने पड़ते हैं. People would ask Prabhupada, how do I get free from all suffering? Prabhupada said, go back to Godhead. लोग श्री प्रभुपाद से पूछते थे कि हमारे सारे क्लेशों का अंत कैसे हो सकता है, तो श्री प्रभुपाद कहते थे भगवत धाम चले जाइए.
And then there's the emotional suffering. और उसके बाद एक भावात्मक दुख आता है। I want something. मुझे कुछ चाहिए, I need to get this. मुझे यह पाना है, I don't get it. लेकिन मुझे मिलता नहीं, I'm not happy. इसलिए मैं दुखी हूँ। I want something. मुझे कुछ चाहिए, I get it. मैं पा जाता हूँ, It doesn't make me happy. लेकिन फिर भी नहीं खुश हो पाता। I want something. मैं कुछ चाहता हूँ, I get it. मैं पा जाता हूँ, It gives me some happiness. मुझे कुछ खुशी मिलती है, And then it leaves me. लेकिन फिर ये सामान मेरे से दूर चला And जाता I'm है, unhappy again. फिर से मैं दुखी हो जाता हूँ। There's no fourth option. तो कोई और विकल्प नहीं है। Now this is material life. तो यह भौतिक जीवन है। So chant the Hare Krishna Maha Mantra. इसलिए हरि नाम का जप करिए। Push back the fire of material existence. इससे आप जो भौतिक जगत की दावाग्नि है उसे बुझा सकते हैं। The holy name is antiseptic and prophylactic. Antiseptic means it's like medicine. तो ये जो हरि नाम है एक औषधि की तरह है। Baba Saudi, right? Aushadhi. 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 It is, medicine, but Baba Rog. That is material life. Baba Roga. तो हरि नाम भव रोग के लिए औषधि है। Yeah, so and prophylactic means protection. तो प्रोफिलैटिक यानी कि सुरक्षा। So the chanting of the holy name will purify our existence and protect us at the same time from the sufferings of material life. तो ये जो हरि नाम का जप है ये हमारा शुद्धिकरण करता है और साथ ही भौतिक जगत से सुरक्षा भी प्रदान करता है। So that is the second benediction that one gets. तो यह दूसरा वरदान है जो हमें मिलता है। The third one, Shreya Kaiva Vichandrika Vitaranam. और तीसरा है श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम। Shreya means auspicious. श्रेय मतलब मंगलमय। Kaiva is an interesting, it's a lotus flower. कैरव मतलब एक कमल का फूल, But it's a special lotus. लेकिन एक विशेष कमल, It's unlike any other lotus. जैसा कि कोई दूसरा कमल नहीं। A lotus flower blooms under the rays of the sun. तो एक जो कमल का फूल है वो सूर्य की रोशनी में खिलता है। When the sun comes out, the lotus flower opens. जब सूर्य आता है तो कमल का फूल खिल जाता है। But this special lotus flower, Kaiva, it blooms under the rays of the moon. लेकिन जो विशेष कमल का फूल है वह चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। And the analogy is that the holy name is like the bright moonshine. और उदाहरण ये है कि जो हरि नाम है वह एक चंद्रमा की रोशनी के समान है। And our heart is like the lotus flower, but the lotus flower is closed. और हमारा हृदय एक बंद कमल के फूल के समान है। Due to our association with Maya, matter, our heart is not open. It's tough. तो माया और भौतिक प्रकृति के संग के कारण अभी हमारा हृदय के कमल की पंखुड़ियां खुली नहीं है। So apply the moonshine of the Hare Krishna Maha Mantra upon the lotus of the heart, and the heart starts to open up. हरे In other words, कृष्ण it starts to become soft. हरे कृष्ण महामंत्र रूपी चंद्रमा की रोशनी के द्वारा हमारा हृदय कोमल होता जाता है और धीरे धीरे खुलने लगता है। Now the acharyas give another explanation for this one आचार्य दूसरी भी टीका करते हैं इसके लिए by saying that the holy name is like one's ultimate good fortune. कि ये हरि नाम जो है व्यक्ति के लिए सबसे अनुपम उपहार और मंगल देता है। They explain that everyone has some good fortune in life. और इसमें यह बताया कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ मंगल तो होता ही है। But one may not be experiencing that good fortune. लेकिन व्यक्ति उस मंगल का अनुभव भले ही ना कर पाए। So your good fortune remains hidden. तो आपका जो अच्छा सौभाग्य है वह छुपा रहता है। It's like if you have some treasure but you can't find it.
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खजाना है और आप उसे खोज नहीं पा रहे हैं, but the holy name awakens that good fortune. लेकिन आप ये हरि नाम का जप है वह आपके सौभाग्य को जगा देता है। What is that good fortune? That one connects with Krishna through the sound of Krishna's holy name. और वह सौभाग्य क्या है कि व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाते हैं भगवान के नाम के द्वारा। A very beautiful description of that particular benediction. Shreya Kairava, beautiful lotus flower. तो यह बहुत ही सुंदर वर्णन है, श्रेय कैरव चंद्र। Vidya Vadu Jivanam. विद्या वधु जीवनम। Vidya means knowledge. विद्या मतलब ज्ञान, Vadu means bride. वधु मतलब बहू, And Jivanam, life. जीवनम यानी कि जीवन। The husband जो is the life of the bride. जो पति है वो पत्नी का जीवन होता है, Especially on the wedding day. विशेषकर शादी के दिन। So the Vadu becomes enlivened by Vidya. तो जो वधु है वह विद्या के द्वारा जीवित होती है। So transcendental knowledge is the life of bhakti. तो यह जो दिव्य ज्ञान है वह भक्ति का जीवन है। And just like a bride feels happy or is given life by the presence of her husband, the bridegroom, on the wedding day. तो जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति को अपने विवाह के दिन पाकर खुश हो जाती है, So in the same way, transcendental knowledge is given life by the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. उसी प्रकार से जो दिव्य ज्ञान है उसको जीवन मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। You see, we don't just speak philosophy. आप देखिए हम सिर्फ दर्शन नहीं बोलते, We have kirtan. हम कीर्तन भी करते हैं। Kirtan awakens our ability to appreciate, understand, and enjoy transcendental knowledge. कीर्तन से हमें यह समझ मिलती कि हम ये जो दिव्य ज्ञान है उसको समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। Prabhupada was at one Pandal program. श्रील प्रभुपाद एक पैंडल प्रोग्राम में थे, And there was many speakers there from different traditions, different spiritual persons. वहाँ पे अलग अलग आध्यात्मिक अलग अलग परंपरा के लोग कई सारे व्यक्ति उपस्थित थे And they were speaking their philosophy. और वे कुछ दर्शन पे चर्चा कर रहे थे। Prabhupada's like this. श्रील प्रभुपाद शांत थे, He's making faces because they're all speaking Mayavad, you know. वो अपने बारी आने का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि सब मायावाद बोल रहे हैं। Big crowd, thousands and thousands of people. बहुत ज्यादा भीड़ थी, हजारों लोग थे। Hour after hour, these guys were speaking. Prabhupada was supposed to speak last. तो घंटों से ये लोग बोल रहे थे और फिर श्री प्रभुपाद को सबसे आखिरी में बोलना था। And Prabhupada's like, can't wait till it gets over, you know. तो श्री प्रभुपाद Can't wait till it finishes, you know. श्री प्रभुपाद इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग खत्म करेंगे। So finally, all of the Mayavadis, the Persalists, the bogus sadhus, they were finished. तो अंत में सारे जो भी मायावादी थे, बकवास साधु थे, वो अपना खत्म कर दिए। If you look at the crowd, nobody understood anything because nobody knows what they're saying. They don't even know what they're saying. और अगर आप भीड़ को देखें तो आप बता सकते थे कि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया था। So Prabhupada's turn to speak. तो फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बोलना चालू किया। He said, "Let's have kirtan." श्रील प्रभुपाद ने कहा चलो कीर्तन करते हैं। So all the devotees came forward. They started, got playing the instrument. Prabhupada led the kirtan. The whole place just went wild. तो फिर सारे भक्त आए, वो वाद्य यंत्र बजाने लगे, श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन चालू किया, पूरा जो भीड़ थी वो एकदम उत्तेजित हो गई नृत्य करने। Like a relief after being in a desert with no water, you know. तो ऐसा लगा उन्हें रेगिस्तान में पानी मिलने से जैसा शांति मिलती हो वैसा उन्हें जीवन मिला। Everybody was just so happy, jumping and singing and having a nice transcendental experience with the holy name. तो सब लोग हरि नाम का जप कर रहे थे, इतना आनंद आ रहा था हरि नाम के जप के कारण। If you could actually see that, it's on film. The people were just really went wild. तो यदि आप उसको फिल्म पे देख सकते तो आप समझ सकते कि लोग सचमुच पागल हो गए थे। And the devotees were jumping off the stage and dancing with everybody. भक्त स्टेज से इधर उधर भी कूद के नाच रहे थे।
Harinam Mahotsava. हरि नाम बहुत शुभ है। Yeah, it was wonderful. So, transcendental knowledge is there, and one cannot really appreciate or understand deeply the philosophy unless one adds the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. तो कोई भी व्यक्ति दर्शन को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो हरि नाम को जप ना करे। That is the fourth benediction. तो यह चौथा वरदान है। The next one, Anandam Buddhivardhanam. अगला आनंदाम बुद्धिवर्धनम। Radharani is there. श्रीमती राधा रानी है। Krishna is there. कृष्ण है। Krishna looks at Radharani. भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं। He sees how beautiful she is. वो देखते हैं वो कितनी सुंदर है। He becomes happy. वो खुश होते हैं। Radharani looks at Krishna. राधा रानी भगवान कृष्ण को समझ जाती हैं। Sees how beautiful he is. वो देखती हैं वो कितने सुंदर हैं। She becomes happy. वो भी खुश हो जाती हैं। Krishna looks back at Radharani and sees that she's become more happy. भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं। More beautiful. वो देखते हैं कि वो राधा रानी और ज्यादा सुंदर हो गई हैं। And he becomes more happy. वो और खुश हो जाते हैं। Radharani looks at Krishna and sees that he's become more beautiful. Therefore, she becomes more happy. तो फिर राधा रानी भगवान कृष्ण को देखती हैं कि वो और सुंदर हो गए तो वो और खुश हो जाती हैं। And Krishna looks at Radharani, sees that she's become more beautiful. He becomes more happy. तो फिर कृष्ण भगवान देखते हैं राधा रानी को और सुंदर हो गई तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। Radharani looks at Krishna, says that he's become more beautiful. Therefore, she becomes more happy. और फिर राधा रानी कृष्ण भगवान को देखती हैं कि अरे ये और ज्यादा सुंदर होंगे तो और खुश हो जाती हैं। No limit. तो कोई अंत नहीं। You can try it with your husband and wife, but I don't know how many times it'll work. आप अगर पति पत्नी के बीच में इसको ट्राई करेंगे तो पता नहीं कितनी बार काम करेगा। It may work once or twice. एक दो बार काम करेगा। Sometimes 3 times. हो सकता है कभी कभी 3 बार। That's how transcendental you are. तो बस इतने ही दिव्य हैं हम। But the point is that transcendental happiness is unlimited. लेकिन तथ्य यह है कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, वह अनंत है। This is a very important principle that is quite unique. तो ये एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The word jiva means limited. तो जीव, Jiva, small, tiny. हाँ, जीव जो सीमित। You're a jiva. जीवा, हमारी जीव, Jiva. Jiva soul. जो जीव है, आत्मा है, वह सीमित है। और Jiva means limited. जीवा मतलब सीमित, जीव सीमित है। But the happiness that the jiva can experience in chanting the holy name is unlimited. लेकिन जो आनंद हरि नाम का जप करने से जीव अनुभव कर सकता है वह अनंत है। There's no limit to how much happiness there is available for the living entity through the chanting of the holy name. एक जीव के लिए कितना आनंद उपलब्ध है उसकी कोई भी सीमा नहीं है यदि वो हरि नाम का जप करे तो। Krishna's name is Krishna. क्योंकि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण है। When you're chanting Krishna's name, you're coming in contact with Krishna, who's unlimited. And although you're limited, your happiness is unlimited in relationship to the unlimited Krishna. क्योंकि आप जब कृष्ण का नाम जप कर रहे होते तो आप कृष्ण भगवान का संग कर रहे होते और कृष्ण भगवान अनंत हैं। तो जब आप उनके नाम का जप कर रहे होते तो आप उस अनंत के संग में होते हैं, इसलिए आप अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। Become so happy you die. यदि आप पूर्ण रूप से खुश हो जाते हैं तो आप मर भी सकते हैं। Devotees die from too much happiness. तो कभी कभी भक्त ज्यादा खुशी से भी मर जाते हैं। It's possible. यह संभव है। Transcendental happiness, not material experience. तो यह एक दिव्य आनंद है, यह भौतिक आनंद नहीं है। That is the fifth benediction. तो यह 5वां वरदान है। Pratipadam purnamrita swadanam. प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। At every step in the process of bhakti, through chanting of the holy name, one is becoming more and more awakened to their actual identity in the spiritual world. तो प्रत्येक पद पर हरि नाम का जप करते हुए जो भक्त है वह
उसका जो मूल स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में उसके प्रति और परिचित होता जाता है। Everyone has an eternal relationship with Krishna. हर एक जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है। And that eternal relationship, we have a particular form, we have a particular name, we have qualities connected with our spiritual identity. और हमारे नित्य संबंध का अर्थ है कि हमारा एक नित्य रूप है, नित्य नाम है और हमारे कुछ गुण हैं जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। Every soul is unique. प्रत्येक आत्मा अपने आप में अद्वितीय है। No two souls are the exact same. कोई भी दो आत्मा पूरी तरीके से समान नहीं होते। And there's unlimited souls. और इस दुनिया में अनगिनत आत्माएं हैं। That's why Krishna wants to exchange love with everyone, because each person is unique in that loving exchange. इसीलिए भगवान कृष्ण सारे जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीव अद्वितीय है। So as we chant, we are uncovering our Siddhadeva or our Siddhapranali, our Istadeva, our actual identity, our spiritual identity. तो जब हम हरि नाम का जप कर रहे होते हैं तो हम अपने जो वास्तविक रूप है उसको जागृत कर रहे होते हैं। And when you reach a certain stage of bhakti, spontaneous and devotional service, you start to realize who you are in the spiritual world. तो आप जब हरि नाम का जप करते हुए शुद्ध हो जाते हैं तो आप यह साक्षात कर सकते हैं कि आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं। Of course, that's assisted by one's spiritual master also. तो यह एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में होता है। He helps you in that regard. वो आपकी सहायता करते हैं इस संबंध में। And the last benediction, number 7, is that my home, my family, my everything I have, whatever is in connect to me in this life, becomes spiritualized. तो आखिरी वरदान है कि हमारा घर, हमारे परिवार, हमारा वह सब कुछ जो इस जन्म में हमसे जुड़ा है सब कुछ पवित्र हो जाता है। That's why they say the body of a pure devotee is spiritual. तो जैसा कि हम कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त का जो शरीर होता है वह आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं। It may look material, but it's not. यह भौतिक दिख सकता है लेकिन है नहीं। Just the example is given when you take an iron rod, you put it in the fire, you leave it in the fire, and you leave it long enough. After some time, it becomes so hot that it's no longer iron; it acts just like fire. तो जैसा कि उदाहरण हम देते हैं कि एक लोहा है, उसको आप आग में रखें, आग में रखे रहिए तो कुछ समय बाद वो लोहा भी आग ही हो जाएगा। So in this last benediction, anything in relationship to you also becomes spiritualized. तो इस आखिरी वरदान में कि जो भी हरि नाम का जप करते हैं उससे जो भी जुड़ा है वह सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। And then the last, then Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. और आखिरी विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Makes a declaration. Dun taran 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 taran. तो एक घोषणा है इस प्रकार की। All glories to Sri Krishna Sankirtanam. तो भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो। That's the way that last thing is, an expression of glorification. तो यह एक अभिव्यक्ति है भगवान के हरि नाम कीर्तन की महिमा की। So this is the first verse, which is Adao Srada Sadhu Sangha Bhajana Kriya. These are the first 3 stages Rupa Goswami describes. Association with devotees, faith in the process, execution of the process, and taking shelter of the bona fide spiritual master. All these are included in that first verse. तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस श्लोक में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, गुरु का आश्रय लेना, ये सब इसमें सम्मिलित है। Okay, so tomorrow we'll speak the second verse. कल दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। Any questions so far on the first verse? कोई प्रश्न? 7 benedictions. Yes, Kishore. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj, for detailed introduction to this verse. So, Guru Maharaj, you told that
8 verses, they are telling about 9 stages of advancement in devotional service, and last 2 verses are prema bhakti. Yeah. What is it? Sambhog and what is it? Vipralamba. Vipralamba is 7 and Sambhog is 8. So since they are in increasing order of advancement, and 7th is telling about Vipralamba, but 8th is telling about Sambhog. Right. But we understand that Vipralamba is highest. So how to understand this? अच्छा, गुरु महाराज आपने बताया कि किस तरह जो 8 श्लोक हैं शिक्षाष्टकम के, तो वो 9 भक्ति के स्तरों को बताते हैं, 7वां विप्रलंब को बताता है और 8वां संभोग को बताता है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि विप्रलंब सब सर्वश्रेष्ठ होता है, तो फिर कैसे इसको समझें? Yeah, that is true in the ecstasy of love, but the goal is Sambhog, to be with Krishna in the spiritual world. यह सही है कि भक्ति के परम आनंद में कि विरह सबसे ऊपर है, लेकिन यदि हम देखें कि जो हमारा लक्ष्य है वह क्या है, वो भगवान कृष्ण के साथ रहना। They say the heart hankering for the presence of the Lord experiences a kind of transcendental happiness that is both painful and at the same time very sweet. It's more like a chutney. तो जब यह दिव्य आनंद की अनुभूति होती है तो यह बहुत ही दर्दनाक भी होती है और साथ ही आनंद भी प्रदान करती है। But the goal is to be with Krishna. लेकिन जो लक्ष्य है वह भगवान कृष्ण के साथ रहना Not है, just be separated from him. सिर्फ उनके साथ विरह में रहना So नहीं। separation leads to meeting. तो ये जो विरह है वह संभोग कराती है। And meeting is the actual perfection. तो भगवान से मिलना वास्तविक सिद्धि है। Is that clear? It's not that we want to be separated from Krishna eternally and consider that to be the highest. Then you just keep experiencing painful types of happiness. ऐसा नहीं कि हम हमेशा भगवान कृष्ण के साथ विरह में ही रहना चाहें, ऐसा करने से बहुत ही हृदय विदीर्ण करने वाला अनुभव होता है। But Vipralamba Bhav is taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu as the mood by which the devotee should be executing their devotional service. Not that I'm with Krishna, I'm trying to be with Krishna, I'm trying to serve Krishna. And in that चाहिए कि हम भक्ति में भगवान के साथ रहने का प्रयास करें, ये ना सोचे कि हम भगवान कृष्ण के साथ हैं, लेकिन इच्छा रहनी चाहिए, लालसा रहनी चाहिए कि हम भगवान का साथ लाभ करें। Shiva Paravatam Pinastumam Madarshanam Marmahatam Karotuva Yadatata Vavidadantulam Putam Matpranam Nastu Saevana Paraha. In that mood of perfection, Radharani is also saying that even if you're not around, still my love is perfect. So there's an element of being with and being separate in both of those. So even in the mood of being with Krishna, there's the mood of separation because Krishna might leave. तो इस प्रेम की प्रकाष्ठा के रूप में जो श्रीमती राधा रानी का भाव है, तो वो इस उन पे यह फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवान के साथ हैं या भी कि नहीं। यदि वो भगवान के साथ रहती भी तो भी उनमें विप्रलंब का भाव रहता है कि वो भगवान से कहीं बिछुड़ ना जाए। Is that okay? Yeah. Anything else? Any other questions? Mataji? Yes. She's sitting in the chair there, over there. Someone. Who's the fastest runner? Okay. Okay. He's fast. Hare Krishna Maharaj. On the same note that Krishna Kishore asked the question, I just wanted to know, there is also that saying that, no, I don't mind being born in any form as long as I remember Krishna and do not forget Krishna. So
how would you, is that kind of mood connected to the statement you made? To want to be with Krishna is a material, is it not a material, but it's a desire. To want to serve Krishna is the highest perfection. So, yeah, wherever you put, Lord Shiva made that point in one verse. He said, Narayana para sarvena kushchana vidyati swapapa varga pavargasya. What's the last line? Apituyate darshana. That the devotees of the Lord, wherever they are, they're going to serve the Lord. That's their happiness. Doesn't matter. So to want to just serve the Lord and please the Lord is the highest perfection of bhakti. And that's why they're praying like that. Haridas Thakur says, let me be born even in the family of your, of dog eaters. Even if those dog eaters are your devotees, then I can get the remnants of their prasadam. So a devotee just wants to serve. But a devotee doesn't say, well, I have to be with Krishna, I want to be with Krishna. That's the ultimate desire, but the devotee doesn't pray like that. He simply wants to serve. Whether it's in the spiritual world, in the material world, or wherever, the mood of service is the expression of the soul's perfection, which is the highest form of happiness. Thank you. Thank you. Is that clear? Thank you. Yeah. Anything else? Okay, so thank you very much. So come for verse number 2 tomorrow, and we'll get into some of the reasons why we don't have any taste for chanting. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sri Sikshastakam ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. His Holiness Candramauli Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai.